question number 6 of exercise 5.2. In the given figure below, decide whether L is parallel to M or no. I am making a figure and I will ask a question from you people. This line is L, this line is M. This M is a transversal. These two angles is given, this is 126 and this is 44. This is the first figure. I will take the second one. This line is L and this line is M. I made a figure. This is a transversal M. In this transversal, this angle is given 75 degrees. And this angle is also given 75 degrees. This is the second figure. And third figure I am taking. This is L, this is M. And this is a transversal M. And this angle is 57. And this angle is 123. This is third figure. And fourth figure here is given. This is L, this is M. And it's like this. This angle is 98 and this angle is 70. Very important question, and so many times this question will be asked in the examination also. I will ask one by one these questions to you. Okay. One by one I will ask the question from you people. You have to give the answer here. First, in first figure, L is parallel to M or no? पहले तो first you give the answer yes or no, or second, what is the reason? You have to write the reason also. आप अपना नोट करके रख लो, सब क्वेश्चंस का रीजन और सब ये है या नहीं है, यस और नो नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा. I will discuss one by one all questions. Please note down. Please note down. Please note down the reason and yes or no. Please switch on your camera also so that I can see the face that you are doing or no. Why कैमरा ऑन नहीं करते हैं? I have made the figure here on the board. First, second, third, and fourth. You have to give the answer of each. हर एक के आंसर आपको बताने मेरे को. And I think the first figure I am coming. First figure. Kamya Sharma. Switch on mic. बेटे इसमें बताओ L is parallel to M है या नहीं है? फर्स्ट फिगर. काम्या, repeat question. बेटा the question is given in your NCERT book also. You please open your NCERT book and see question number 6. अगर आपको बोर्ड अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा है तो बुक में भी तो है ना क्वेश्चन, बुक में भी तो फिगर है ना.
It is given in the book also. Kamya. Yes. First figure. Hemant Meena, I think he joined the class. Switch on your mic. Hemant, switch on your mic. Hemant Meena, switch on your mic. Anyone want to give the answer of this? Question number 1, raise your hand. Sir, Raise your hand. Vivek Mahajan. Vivek Mahajan, please. Sir. Yes. Here, L is parallel to M. L is parallel to M. क्या इस फिगर में L is parallel to M है? विवेक, No. No. आपने दिया no. Why? Because when we add Yes, you are correct, beta. because when we add 44 degree plus 126 degree is equals to 170 degree, and 170 degree is not equals to 180 degree. So L and M are not parallel. Anyone have given the correct answer? ये तो ठीक है, Yes, इन्होंने एक मैथमेटिकली बताया, ये वेरी गुड, आपने एक मैथमेटिकली बताया, बट व्हाट इज द रूल? may I, sir? Can I tell? Yeah, May I? Umar, speak. No, because the sum of interior angle is equals to 180 and the sum of these two angles are not is equal to 180. Yeah. Okay, I am telling, please you write the reason. No, it is no. Reason is because sum of interior angle. Is not equal to 180. No, better listen. Sum of interior angle on the same side of a transversal. Sum of Is not interior 180. angle on the same side of a transversal is not supplementary. Thus, this is the reason. Sir, I have in confusion. Sum of the interior angle on the same side of a transversal Sir, is हमें not से supplementary. Listen first. Sum of the interior angle on the same side of a transversal is not supplementary. So lines are not parallel. Okay, beta. This reason you write. No के साथ ये reason लिखना. हाँ बोलो उत्कर्ष. Now you tell. मैं ये पूछ रहा था सर, हम ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 इन द पैरेलल लाइंस, दैट्स व्हाई द दिस इज नॉट पैरेलल. One thing you listen it. One thing. All of you. You know the mathematical language. In mathematics, it is not history or civics or English that you have to apply so great language. No. एग्जामिनर जो एग्जाम को जो पेपर चेक करता है वो ये देखता है कि आपकी लैंग्वेज अप टू द मार्क है या नहीं है. सिंपली आई गिव ए रीजन टू यू. यू सी, देखो, आई एम टेलिंग वन थिंग. लिसन केयरफुली. आई डू दिस क्वेश्चन बट आई एम टेलिंग वन थिंग. सी, कैन यू सी हियर? क्या देख सकते हो ना? देखो मैं लिखा, आई अप्लाइड ए ब्रैकेट. I applied x for that. X is equal to P upon Q, comma, Q is not equal to 0, and P and Q belongs to I or bracket बंद कर दिया. Bracket I close.
you know this have a language, ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज। और मालूम है कौन सी लैंग्वेज है ये मैथ्स की? इट इज ए डेफिनेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, मैंने मैथमेटिकली लिख दिया उसको पूरा ब्रैकेट में लेके। क्या? रेशनल नंबर, ए नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q is not equal to 0 and p and q, और ये साइन होता है belongs to, p and q belongs to integers are called rational numbers। देखो कितनी बड़ी लैंग्वेज को मैंने छोटी सी लैंग्वेज में लिख दिया, मैथमेटिकल लैंग्वेज। हिस्ट्री नहीं लिखना आपको, अप टू द मार्क पॉइंट आउट करना है, जो रूल है उसको पॉइंट आउट करना है। व्हाट इज द रीजन हियर? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज नॉट सप्लीमेंट्री, दैट्स ऑल। ये सप्लीमेंट्री नहीं है। अब उसको करके दिखाओ, ये दिखाओ, हमें से कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिनर अपने आप देखेगा कि बच्चे ने जो बोला है वो सही है या नहीं है। जो चेक करने वाला है वो देखेगा what student is telling, is it correct or not? Okay beta? Okay, second figure is L is parallel to M, is L is parallel to M? No sir. No sir. No, sir. आप ये भी नहीं कह सकते कि ये मतलब कि दिख नहीं रहा है, फिगर में नहीं दिख रहा सर, ऐसा नहीं कह सकते। You have to give a reason for that. You have to give a reason for that. What is the reason for this? Second में no बोला, why? आज ये एंगल इसको वर्टिकली अपोजिट, दिस इज 75, फिगर में इसको 75 शो कर दिया आपने, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। अब आप कौन सा रीजन दे सकते हो? वही जो पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, Interior Is angle not of the supplementary. same side of the transversal is supplementary. On the same side of the interior angle. so second also no, second also no, sir. Second is also no. I am coming to third one. Third one, yes or no? Raise your hands. Sir, yes. Sir, yes. Yes, sir. Prithvi, Yes, sir. is it yes or no? Yes, sir. Chirag, is it yes or no? Yes, sir. Rasmika, switch on your mic. Yes sir. Ajram, Yes sir. yes or no? Yes. If you are saying yes, then what is the reason? आप कुछ भी Sir, बता सकते because supplementary angles property of parallel हो। क्या lines. 57 ले आओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 57 ले रख दो, और इन दोनों का सम क्या है बेटे? 180 है ना? Yes, है ना? sir. एक साइड में 180 है ना? Yes, sir. Yes, sir. In sum of interior angle on the same side of a transversal is supplementary. So lines are parallel. Right? Yes, sir. Yes. Sir, Human how mother- can we write like this? Yes, because the sum of the linear pair is supplementary. No, no, no. Linear pair का parallel line से कोई लेना देना नहीं है। Sir, Parallel- corresponding angle से 123 ऊपर भी हो सकता है ना? Corresponding angles are equal. One minute. आपको फिगर में मैंने ये एंगल ये दिखाया है, मैंने दिखाया ये इधर। अगर आप ये एंगल दिखाओगे ना यहाँ, सपोज आपने यहाँ एंगल दिखाया, ये एंगल कितना दिखाया आपने? 123। फिर आप कहोगे corresponding angles are equal. Equal. So lines are parallel.
वो तो आप जो फिगर में जो चीज दिखा रहे हो, what you are showing in the figure, that region you have to write. आपने 123 उधर दिखाया तो आपको क्या रीजन लिखना पड़ेगा? Corresponding Yes. angles are same. Yes, because corresponding angles are equal. मैंने बेटे कुमुद कल भी बताया था ना, one mathematics question can be solved in different ways. Am I right? In different ways we can solve the question. Yes, sir. Yes, sir. आपने जो वे लगाया उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा. Right? You understood? Anjali understood? Yes, sir. Anjali, Meena. मुझे रीजन में थोड़ा सा What about this figure? Fourth figure. Fourth figure. Fourth figure. Arshul. Switch on your mic. Arshul, are you in the class? Rashmika is in the class. Rashmika. Rashmika is in the class. What about say? What you will say about this? देखो मैं कैसे भी कह सकता हूँ, मैंने इस 72 डिग्री एंगल को यहीं दिया है 70. फिगर में दिखा दिया मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल. अब इन दोनों एंगल का सम दिखा. Same side of the transversal. 170 degree. Oh no, are not equal. no, because some of the interior angle Interior Because the sum of angles the serves interior angle on the same side of the transversal is not supplementary. is not supplement. But that's all. You can write the reason like this. I think now from lines and angles there should be no problem. I think so. And you please complete this 2 exercises. और मैं इसका assignment आपको दूंगा. Please, I request you all. जब भी मैं assignment दूं, फटाफट उसको return कर दीजिएगा आपने. ओके? ये नहीं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे. No. I am doing all of the questions. तो आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा? I think there should not be problem. तो आप जरूर मेरे को, और आप जितना असाइनमेंट मेरे को बैक करेंगे, सेकंड सैटरडे में हॉलीडे देयर, मैं एक साथ बैठता हूँ, सबका रिटर्न कर दूंगा. सारे असाइनमेंट रिटर्न कर दूंगा मैं सेकंड सैटरडे. Okay, sir. Okay, sir. मैक्सिमम आज मैं ये असाइनमेंट दूंगा आपको लाइन एंड एंगल्स का. आप सारे के सारे मेरे को बैक करिए, क्योंकि देयर आर ओनली 2 एक्सरसाइजेस, वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड यू कैन डू. Okay, sir. So our lines and angles is completed now. Now lines and angle is complete. Okay. Now Okay, sir. now I will come to the next chapter to you, triangle and its properties. I will give some hints to you about the triangle. थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा, थोड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा. प्लीज. Triangle. Tell me the definition of triangle first. Tell me the definition of triangle. Anyone? The simple definition is Simple a definition. diagram made of 3 lines. Any other one? It is a geometrical figure which is made up of 3 sides and have length, breadth and height. Any other one? Sir, triangle is a closed figure which is made by joining 3 points. Any other one?
कोई भी बोलना चाहता हो Sir. प्लीज? यस Sir, triangle is a closed figure made by three non-collinear points when joined together. Base. It has a base. It has three sides and it's the most strongest shape. और एनी अदर वन? कोई भी Sir, बोलना चाहे Sir, it has three verticals, three side. एनी अदर वन? Sir, a figure made by three non-collinear points. Any other one? Utkarsh, you are in the class or not? Yes, sir. Well, Sir, the triangle has three angles, and all three angles. I am not asking the property, I am asking the definition. You are telling the property to me. Khushi, tell better. मैं लिखूं, देखो कितना सिंपल लिखूंगा। three-sided closed figure, closed geometrical figure is called simple definition. Geometrical figure covered with three sides. You can make your definition. A geometrical figure covered with three sides. Covering होनी चाहिए, वो cover होनी चाहिए, तीनों साइड मिलनी चाहिए एक जगह पे. Three-sided closed geometrical figure is called triangle. वैसे कई बच्चों ने ये बताया भी है. Chirag have given a closed word first time. He told that closed figures are geometrical closed figure. अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, यस, ये क्लोज्ड फिगर. दिस इज ट्रायंगल ABC. Now I can tell the properties. The triangle you can write the first triangle have three sides, three angles. The sum of its triangles is equal to 180. Is the triangle ABC. It is written like this. ये जो छोटा सा साइड है इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल. ट्रायंगल ABC. Okay, sir. ट्रायंगल ABC. Now इसके नीचे आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं. What are the properties? It has three sides and three angles. And the sum of three angles is वो that 180. we will do later. वो बाद में करेंगे. अभी तो हम छोटा सा चीज पे आते हैं कि भाई इसके थ्री साइड होती है, थ्री एंगल्स होते हैं. और you know, triangle divide the plane into three parts. Can you tell? Anyone can tell what are the parts? Isosceles angles. No. Scalene triangle, Sir, please equilateral. repeat. No. Please listen my question. Triangle divide this plane into three parts. What are these three parts? Anyone can tell? First is here. ये ट्रायंगल मैंने बना रखा है यहाँ पे. ये जो कहलाता है, this is called interior of the triangle. What is this? Interior part of the triangle. Right? And what is this? ABC. On the triangle. ये ट्रायंगल के ऊपर है. And this part is what? Out the triangle. Exterior of the triangle. Exterior, sir. थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल की फिगर. एक प्लेन को थ्री पार्ट में डिवाइड कर रहा है. वन इज इंटीरियर, अनदर इज दिस ट्रायंगल इटसेल्फ,
Third is exterior of the triangle. Exterior of the triangle. This is all about the triangle I have told to you people. About the triangle I have told you. You can write all the things that you don't know. You can write these things in the book. Noted, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, noted. Listen now. Listen. Triangle having three sides, three angle, and three vertices. A, B, C. These are the vertices. Angle E, angle A, angle B, angle C. Three sides are what? A, B, E, C, C. These are the three. You know the types of triangle? You are done in 600. What are the types of triangle? Yes, sir. Yes, sir. Types of triangle. Isosceles Listen, listen. angle, acute angle, triangle, angle, triangle. Listen me. There are 6 types of triangle. 3 होती है साइड से और 3 होती है एंगल से. 3 from sides and 3 from angles. Now I am asking, what are the 3 types of triangle according to side? According to side. Sir, can I tell? According to side. No. I will ask the answer from any other one. Hemant is there in the class. Hemant Meena, switch on your mic. Hemant. Apurva, switch on your mic. Sir, can you repeat the question? I am telling you, there are 6 types of triangle. इस 6 टाइप में 3 साइड से होती है, 3 एंगल से होती है. नेम ऑफ द ट्रायंगल. तो आप मेरे को बताओ, जो साइड से 3 टाइप की ट्रायंगल होती है वो कौन कौन सी होती है? टेल मी अपूर्वा. जो हम साइड से हाँ और equilateral. She has told the 3 one. One is scalar triangle, another she told isosceles triangle, third is equilateral triangle. These are the side से होती है ये triangle. ये तीनों साइड से होती है और तीनों की definition you should know. You are done because it is not in 7th standard. You are done in 6th standard. I want to ask you people, what is a scalar triangle? What is a scalar triangle? Nitya Sharma. Nitya Sharma, switch on your mic and tell, what is a scalar triangle? Scalar triangle क्या होती है? Naveen Kumar raised the hand. Please tell. Switch on your mic, Naveen. What is a scalar? Sir, the triangle which have do not have equal sides of a triangle of 3 sides. देखो उसने बोला सही है.
बोला सही है, बट सिंपल वे में आप बता सकते हो उसको। ट्राइंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट है, उनकी लेंथ डिफरेंट हो। ट्राइंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड इज कॉल्ड स्केलर ट्राइंगल। ट्राइंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट होगी, उनकी लेंथ डिफरेंट है। ट्राइंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड्स इज कॉल्ड स्केलर ट्राइंगल। Okay, beta, I will discuss, I will again, tomorrow I will come to this topic, and tomorrow I will come all the things about the triangle. Okay? Okay, sir. अभी मैं क्या, sir is here, तो वो class, next class लेंगे. I will close the recording. Okay, sir. Bye, sir.